You can see over here again that effect of temperature on the enzyme catalyzed reaction. If you plot a velocity on a y, okay, temperature versus velocity. So initially, if you increase the temperature, the rate of reaction or the velocity of reaction will increase up to a maximum, and after that it will decline. So this is known as the optimum temperature of your enzyme. Okay, most of the enzymes will have optimum temperature less than 40. Less than 40 से optimum temperature होता है most of the enzymes का, and few enzymes they have optimum temperature more than 40. जैसे मैंने बोला tag DNA polymerase. Okay. Now next is nothing but the effect of pH. Okay, effect of pH on the enzyme catalyzed reaction. So in the same way as that of the temperature, जैसे temperature का curve आया था आपको bell shaped, same thing you are going to get in the pH also. If you plot a pH versus velocity of reaction, you plot pH versus velocity of reaction. Okay, so again you are going to get such kind of curve only. Okay, so because every enzyme will have its optimum pH, the pH at which it will show the maximum catalyzation capacity, or it will show maximum catalysis, known as optimum optimum pH of your enzyme. So for example, pepsin has optimum pH around 3.5. Amylase has optimum pH around 7. So your arginase has an optimum pH around around 10, like that. Every enzyme has its own optimum pH at which it will show maximum catalyzation or maximum rate of reaction. Effect of pH. A bell-shaped curve is obtained. We have already, I have already shown you. So each enzyme will have optimum pH at which the velocity is maximum. At which the velocity is maximum. Below and above the optimum pH, obviously the velocity will be less. Okay, than optimum pH. Now, effect of product concentration. Product concentration, as मैंने जैसे अपने देखा E plus yes, enzyme plus separate will form a enzyme substrate complex, and then enzyme substrate complex will produce a product, right? Now if there is a increased concentration of product, what will happen? So obviously if there is increased if there is increased production of product, so it will decrease the reaction velocity. जैसे जैसे प्रोडक्ट accumulation होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट का concentration बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन का रेट कम करेगा. बिकॉज so whatever product is there, so it will loosely bound with the active site of enzyme. I will explain you what is active site, because all the enzyme catalysis is done at an active site. Because एंजाइम जो है ना वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मतलब इनके सब मॉलिक्यूल वेट. सो एंजाइम इज हैविंग लार्ज साइज एंड सबस्ट्रेट एज कंपेयर टू एंजाइम, सबस्ट्रेट जो होता है वो छोटा होता है in terms of molecular weight and all that. So substrate is a smaller molecule as compared to enzyme, and that's why, okay, that's why if the product is accumulated, if the concentration of product is there, so what happen, so product may interact with the active site of enzyme and may decrease the reaction velocity. So effect of product concentration, this is a प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होगा, कम होगा. नाउ सम एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटल्स cations, okay, metal cations for the their catalyst. So some enzymes require metal cations as a cofactor. As a cofactor they need a metal cations like magnesium, manganese, zinc, calcium for their optimum activity, now if these, okay, if this metal ion, if they are not bound to enzyme, then it is known as a metal activators. Okay, metal activators, एक इसको क्या बोलेंगे अपन, metal activator of enzyme or metal activated enzyme. There is one more term. If these metals are bound to a enzymes, if these metals are bound in the enzyme, if they are part of enzyme structure, then it is known as a metallozyme. So in this case, these metals they holds, okay, metallozymes hold metals tightly मतलब इनमें bond होता है. So if metal ion, if they are a part of enzyme, if there is a structure bond between metals and enzyme, then that is known as a metallozyme. ठीक है,
But some enzymes they are not bonding, they are not having bonding between metals and enzyme, but still these metal ions they are required. कुछ एंजाइम्स लगते हैं, जो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके ये मेटल आयन लगते हैं टू शो द ऑप्टिमम एक्टिविटी विदाउट देयर, है ना, वो दे एक्ट एज अ को फैक्टर, है ना, ये दो एक्ट एज अ को फैक्टर. बट कुछ एंजाइम्स में क्या होता है कि दिस मेटल्स दे बाइंड्स टाइटली, मींस दे फॉर्म ए बॉन्ड विद द एंजाइम्स, एंड सच complex is known as a metallozyme. Okay? And they are not readily exchanged. There is no readily exchange, which are not readily exchanged. मतलब क्या, ये डायलिसिस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डायलाइज और यू कैन नॉट सेपरेट मेटल आयन एंड एंजाइम इन केस ऑफ मेटलोजाइम. तो मेटलोजाइम में वो मेटल सेपरेट नहीं कर सकते. और एंजाइम इनहिबिशन, तो एंजाइम इनहिबिशन नेक्स्ट पार्ट इज एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन मतलब क्या है? So decrease in the velocity of or decrease in the catalytic activity of enzyme is known as a enzyme inhibition. Decrease in the catalytic activity. ना उसका काम क्या है एंजाइम का कि कैटलाइज करना, एक्टिवेशन एनर्जी लो करना एंड रिएक्शन को प्रोसीड करना. अगर कम कर रहा है कोई तो उसको बोलेंगे अपन इनहिबिशन. सो डिक्रीज इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is known as a enzyme inhibition. Now there are three types of enzyme inhibition. There are three types of enzyme inhibition. So first one is known as competitive inhibition or reversible inhibition. Reversible inhibition or competitive inhibition. So in the reversible inhibition, so whatever inhibitor is there, so it binds non-covalently with the enzyme. So जो reversible inhibition होता है उसमें जो inhibitor होता है वो non-covalently bind करता है. Means it is a dissociable. It can be easily detached, non-covalent with the enzyme, and enzyme inhibition is reversed. Enzyme inhibition can be reversed. So in the reversible inhibition only we have two type of inhibition. There is a competitive and non-competitive. So first one is a competitive inhibition. रिवर्सिबल में ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. एंड अनदर वन इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन. तो पहले अपन देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हिच इज अंडर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर जो होता है एंड एंजाइम जो होता है दे आर नॉन कोवैलेंटली बाउंड. सो इन द रिवर्सिबल इनहिबिशन इनहिबिटर will not bond to enzyme covalently and it can be easily separated, dissociated. Okay, now in that you have two type. So competitive inhibition, आपको याद रखना है competitive मतलब कि competition. competition किस में होता है? competition होता है ना, जो एक पर्टिकुलर रेंज में, मतलब कंपटीशन करना है, मुझे कंपटीशन करना है कि टेस्ट कंपटीशन करना है, मैं 10th के बच्चों को लेके और आपको लेके थोड़ी कंपटीशन कर सकता हूँ. कंपटीशन के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कंपटीशन किसके बीच में होता है, एक सिमिलर पॉपुलेशन के बीच में होता है. जैसे आप स्टूडेंट हो बी फार्म फोर्थ ईयर की, है ना, तो बी फार्म फोर्थ ईयर के स्टूडेंट में अगर कंपटीशन करेंगे तो उनके बी फार्म फोर्थ ईयर की बच रहेंगे. तो वी कैन नॉट डू कंपटीशन बिटवीन बी फार्म फोर्थ ईयर एंड बी फार्म फर्स्ट ईयर, है ना. ऐसा कोई टेस्ट लेगा, है ना, जीपैट का कोई मॉक टेस्ट है तो कंपटीशन रखना है फर्स्ट ईयर के बच्चे और लास्ट ईयर के बच्चे, ये ना इंसाफी होगी ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे को ज्यादा कुछ सिलेबस होता ही नहीं, लास्ट ईयर के बच्चे को हो चुका है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब क्या है? ऑब्वियसली दे विल हैव क्लोज रिजेम्बलेंस, दे विल हैव क्लोज रिजेम्बलेंस इन द स्ट्रक्चर. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, competitive inhibitor and substrate will have similar structure. Competitive inhibitor and substrate will have close resemblance in similar structure, and it can be called as a analog, substrate analog. Competitive inhibitor जो होता है, so competitive inhibitor will have a same structure as that of the substrate or similar looking. Okay, so competitive inhibitor is similar looking as that of substrate, and that's why it is called as a substrate analog, है ना, substrate analog. Now in case of competitive inhibition, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, you have to be careful about this. Okay, so in case of competitive inhibition, your substrate has a similar structure with the inhibitor. Substrate and inhibitor have similar structure, inhibitor and substrate similar structure, and that's why inhibitor can be called as a substrate analog. Now in this what happens as per as the enzyme contexts are concerned. So in the competitive inhibition, the Km value increases in the
in the competitive inhibition Km value increases whereas the Vmax remains constant or unchanged. In competitive inhibition Km value जो है Michael is maintaining value, it will increase and Vmax will remain same or remain constant. क्योंकि टर्म्स के ही बीच में सब आपको कंफ्यूज करेगा GPAT. So in competitive inhibition Km value increases whereas Vmax remains constant. और इसके ही ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपको पहला टर्म देगा है ना, फिर क्वेश्चन पूछेगा इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. और आपको ऑप्शन मिलेगा कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट एंड inhibitor will have close resemblance or same structure. Then second point में आएगा आपको in competitive inhibition Km value increases and Vmax decreases. ठीक है. थर्ड ऑप्शन में आएगा Km value increases Vmax remains constant. फोर्थ ऑप्शन में आएगा है ना, फोर्थ ऑप्शन में आएगा आपका Km value decreases and Vmax increases. ऐसा ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं. So remember in competitive inhibition the inhibitor and substrate will have same structure, similar looking structure, and here Km value increases. इतना याद रखो, Vmax के बारे में सोचे मत, Vmax remains constant. Okay? So Km value increases, Vmax remains constant. And in case of competitive inhibition, Vmax decrease होता है ना, and Km value remains constant. ऐसा है. तो देखो, am I audible to you? Examples of this competitive inhibitor. So enzyme succinate dehydrogenase, succinate dehydrogenase. ये एंजाइम कहाँ पे आता है? आता है आपका क्रेब साइकिल में. क्रेब साइकिल में आपको आपने देखा है succinate dehydrogenase. So is a classical example of this competitive type of inhibition with the succinic acid. Succinic acid क्या है? इसका substrate है. Succinic acid is substrate for succinate dehydrogenase. Now succinate dehydrogenase will convert succinic acid into oxalic acid, है ना, oxalate में, है ना. सक्सिनिक एसिड को ऑक्सलेट में करने का काम करता है. बट इफ देयर इज अ मेलनिक एसिड, इफ देयर इज अ ग्लूटारिक एसिड, इफ देयर इज अ मेलनिक एसिड एंड ग्लूटारिक एसिड, these two are nothing but the okay malonic acid, glutaric acid, oxalic acid, they are the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. तो ये तीन एसिड जो है ऑक्सैलिक है ना, ग्लूटारिक, मेलनिक, तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना. सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन ऑक्सैलिक एसिड में करता है. कौन करता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजन. सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजन इज एंजाइम. ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, है ना. उसका सबस्ट्रेट कौन है भाई? सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टर, है ना. सबस्ट्रेट कौन है उसका? उसका सबस्ट्रेट होता है सक्सिनिक एसिड, है ना. और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड. प्रोडक्ट है आपका ऑक्सैलिक एसिड, है ना. अगर सिर्फ सक्सिनिक एसिड है और एंजाइम है तो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन अगर सक्सिनिक एसिड भी है और सक्सिनिक एसिड है, उसके साथ में ये भी है, कौन सा? मेलनिक एसिड या फिर ग्लूटारिक एसिड या फिर उसका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट भी है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये क्या करेगा? इनका स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड के जैसे ही होता है एंड ये इसको इनहिबिट करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन. दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज नथिंग बट द मिथेनॉल कैन बी यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ इथेनॉल, है ना. बिकॉज देखो पॉइजनिंग में इसमें क्या होता है, आपने ऑलरेडी देखा है अल्कोहल चैप्टर में. इफ यू डोंट नो यू कैन गो एंड चेक इन रिकॉर्डेड वीडियोस. सो हाउ अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड. फर्स्ट आपने इथेनॉल ले लिया, आपका इथेनॉल बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है? तो इथेनॉल इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. फर्स्ट इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. तो इथेनॉल का अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है इथेनॉल का कन्वर्जन करेगा एसिटाइलडेहाइड में. So by using alcohol dehydrogenase, ethanol is converted to acetaldehyde, and then acetaldehyde जो है that is converted into acetic acid by aldehyde dehydrogenase. Now methanol कैसे convert होता है? Methanol is metabolized by alcohol dehydrogenase first. Methanol is converted into formic acid. Sorry, ethanol is converted into formaldehyde first by alcohol dehydrogenase. Then aldehyde dehydrogenase will convert formaldehyde into formic acid. है ना? Now if you got methanol poisoning, क्यों होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग? जैसे गांव के यहाँ पे गावठी दारू बनाते हैं, तो गावठी दारू में क्या होता है, कभी कभी फर्मेंटेशन
करेक्ट नहीं हुआ या फिर फिल्ट्रेशन उनका करेक्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ या फिर रॉ मटेरियल उन्होंने प्रॉपर यूज नहीं किया. सो along with the ethanol, some methanol also generates, and that's why if you consume that raw alcohol, so what happens, you got a poisoning. And poisoning क्यों होता है? क्योंकि मिथेनॉल का कन्वर्जन होता है फॉर्माल्डिहाइड में, एंड फॉर्माल्डिहाइड आपकी बॉडी में अगर आ गया तो आप सोचो क्या होगा. और बाद में फॉर्माल्डिहाइड का कन्वर्जन होता है फॉर्मिक एसिड में. फॉर्मिक एसिड अगर बॉडी में आ गया तो क्या होगा? पॉइजनिंग होता है, राइट. नाउ ethanol and methanol, they are having same structure, similar looking structure. Now if you got poisoning of methanol, so ethanol can be used. क्यों? क्योंकि मिथेनॉल का पॉइजनिंग हुआ है, आप इथेनॉल दे दो उसको. इथेनॉल दे दे तो क्या होगा? इथेनॉल हैज अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द अल्कोहल डिहाइड्रोजन. मिथेनॉल से पहले भी इथेनॉल जाएगा, इथेनॉल जाके वो आप मेटाबोलाइज होने का ट्राई करेगा, तो मिथेनॉल को फ्री कर देगा. तब तक आप मिथेनॉल को डायलिसिस करके रिमूव कर सकते हो. क्योंकि मिथेनॉल पॉइजनिंग में सिम्टम जो होता है वो मिथेनॉल से नहीं आ रहा है, ये मिथेनॉल की वजह से सिम्टम नहीं आ रहा है. वो क्यों सिम्टम आ रहा है? मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, तो मिथेनॉल का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड में. उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्जन हो रहा है फॉर्मिक एसिड में, और जो भी फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से सिम्टम आता है उसको अपन मिथेनॉल पॉइजनिंग का सिम्टम बोलते हैं. बट पॉइजनिंग का सिम्टम मिथेनॉल की वजह से नहीं आ रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म होने की बात. तो आप क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो मेटाबॉलिज्म. कैसे? बाय यूजिंग इथेनॉल. इथेनॉल दे दो तो इथेनॉल मेटाबॉलाइज होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस उसमें एंगेज हो जाएगा, तो उसको छोड़ देगा, उसको पकड़ ले. ठीक है, दैट्स व्हाई मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल कैन बी यूज्ड. सो अनदर एग्जांपल इज मिथेनॉल व्हिच कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, सॉरी, इथेनॉल कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग. यहाँ पे अपोजिट हो गया है ना. सो इथेनॉल पॉइजनिंग में मिथेनॉल नहीं यूज करना है, मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल यूज करना है, because ethanol can compete with the methanol for the enzyme alcohol dehydrogenase. Are you getting or not? समझ रहे हैं? Yes or no? फटाफट सांगो. We will see for we'll see next non-competitive inhibition. So non-competitive inhibition, in that your substrate and your inhibitor will not have structural resemblance. Will not have a structural resemblance. So in case of non-competitive inhibition, the inhibitor binds to the site or the other than the active site of enzyme, and other than the active site of enzyme. तो एंजाइम में क्या होता है कि एंजाइम बड़ा मॉलिक्यूल होता है, देयर इज वन पर्टिकुलर साइट, ओके, वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप. ओके, सो दैट इज नोन एज एक्टिव साइट. उसके बारे में अपन देखेंगे बाद में. नाउ इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सो एक्टिव साइट के ऊपर ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाता है और जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसको हटा देगा. नाउ इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड with the other side, not active side, and this binding impairs the enzyme function. Inhibitor does not have any structural resemblance to the substrate. Competitive inhibitor में क्या था कि inhibitor will have a structure similar to your substrate, but in this case the inhibitor will not have any structural resemblance to the substrate, okay, but has a strong strong affinity towards the enzyme. It has a strong affinity to bind second site of enzyme other than active site. It is known as non-competitive inhibition. Now in this case, in non-competitive inhibition, Km value is unchanged. मैंने बोला था Km value is unchanged and Vmax is lowered. यहाँ पे Vmax lowered होगा, मतलब rate of reaction कम होगा and Km value will be unchanged. और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. So in competitive inhibition क्या होगा, non-competitive inhibition में क्या होगा? Already क्वेश्चन आ चुके हैं इसका. So heavy metals, example heavy metals like lead, है ना, arsenic, mercury, है ना, they can bind they can bind non-competitively with the enzyme by binding with the cysteine and sulfhydryl groups of enzyme. This is cytochrome oxidase वगैरह. So they will bind to other side, not to active side, and that's why they will cause a non-competitive inhibition, right? Irreversible inhibition में क्या होता है? So inhibitor will bind with the enzyme covalently and inactivate the enzyme, inactivate them, which is a reversible, and the inhibitor are usually toxic in nature. ये जो inhibitor होता है toxic in nature होता है, right? Toxic in nature होता है. So non-competitive inhibition. So it is a non-competitive inhibition, right? Are you getting or not? Are you getting or not?
आर यू गेटिंग और नॉट? सो एग्जांपल यस और नो, एक 10 मिनट में अपने आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, बाद में कल देखेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नो? हेलो। Next example is nothing but the pyruvate acetate. So example is a pyruvate acetate, which is an irreversible inhibitor of enzyme like pepin, glycerylate 3-phosphate dehydrogenase. Now it combines with the sulfhydryl group and inactivate the enzyme. तो देखो नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपन देखा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बाद में चल रहा है आपका इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो रिवर्सिबल रिवर्सिबल इनहिबिशन है मेन हेडिंग, तो उसमें क्या है कि इनहिबिटर विल नॉट बाइंड कोवैलेंटली विद द एंजाइम, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन इनहिबिटर एंड एंजाइम, राइट? सो एग्जांपल क्या है उसका? एग्जांपल पायरुवेट एसिटेट। पायरुवेट एसिटेट is an irreversible inhibitor of enzyme like papain glyceride 3-phosphate dehydrogenase. By combining with the sulfhydryl group, it inactivates the enzyme. This is the irreversible type inhibition. Next one is also there, diisopropyl fluorophosphate, DFP, diisopropyl fluorophosphate. Diisopropyl fluorophosphate is again a nerve gas. ये क्या होता है? nerve gas होता है। Diisopropyl fluorophosphate is a nerve gas developed by Germany during Second World War. जो हिटलर था, हिटलर ने ये गैस बनाया था, diisopropyl fluorophosphate. Diisopropyl fluorophosphate. So it was developed by Hitler during Second World War, and this molecule inhibit the enzyme like serine proteases and acetylcholine esterase irreversibly. ये क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। तो ये एसिटिलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली, और उसके कारण क्या होता है? सो इफ एसिटिलकोलिन एस्टरेज, उसका रोल क्या होता है? एसिटिलकोलिन एस्टरेज इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिलकोलिन। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा एसिटिलकोलिन का, क्योंकि ये डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट विल इनहिबिट द एसिटिलकोलिन एस्टरेज, तो एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली एसिटिलकोलिन विल इंक्रीज ऑल काइंड ऑफ सिक्रेशन, it will increase GIT peristalsis, it will increase the urinary peristalsis, it will depress your heart, है ना? तो अगर all kind of secretion बढ़ा देगा तो क्या होगा? आपका नाक में secretion बढ़ जाएगा, आइज में secretion बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके GIT में बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके ब्रोंकियल ट्री में बढ़ जाएगा। अगर ब्रोंकियल ट्री में secretion बढ़ गया तो you will feel suffocation, आपका सांस नहीं आएगी, आप मर जाओगे। देन अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एसिटिलकोलिन, ये क्या करता है? जीआईटी में सभी सिक्रेशन बढ़ा देता है, और जीआईटी का पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है तो आपको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर यूरिनरी पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है तो आपको मतलब आपको यूरिन बहुत ही ज्यादा आएगा, है ना? आप हो सकता है आप आपके क्लॉथ में भी कर दे, है ना? सो ये सब होता है ड्यू टू एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिशन, राइट? और आदमी मर जाता है। सो इन दिस केस the antidote we already seen, pralidoxim is known as a cholinesterase reactivator. ये already अपन देखा है ना? So it is also one of the example of irreversible inhibition. Now cyanide poisoning में भी देखो, cyanide inhibit cytochrome oxidase irreversibly. Okay? Again disulfiram is a drug used in the alcohol addiction. And disulfiram को अपन बोलते हैं anti-abuse है ना, is a irreversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase and used in the treatment of alcohol addiction, है ना? तो irreversible inhibition के examples देखो, examples याद रखना है आपको, क्वेश्चन आता है इसका। So you can see over here again same thing. Okay, so substrate saturation curve in case of competitive inhibition or competitive inhibitor देखो ये क्या है आपका? So velocity of enzyme catalyzed reaction, and यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका substrate concentration. Now in absence of competitive inhibitor, so you know that आपका कर्व कैसा आएगा? पैराबोला, है ना? जैसे ये लीव कर्व, reaction will proceed, but in presence of competitive inhibitor क्या होगा? आपका रिएक्शन वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। सो यू कैन सी, और इसका वेलोसिटी कितना है? ज्यादा है। यहाँ पे देखो हाफ ऑफ Vmax, यहाँ पे हाफ ऑफ Vmax, ये क्या है? Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना? इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, देखो, है ना? यहाँ पे कम हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। Vmax is decreased, Vmax is
unchanged, but Km value क्या होता है? Km value will increase. Km value will increase. Okay. Now, in case of non-competitive inhibition, you can see over here. In case of non-competitive inhibition, क्या होगा? Now you will not, this non-competitive inhibitor will not have structural resemblance to the uh, substrate. So that's why देखो यहाँ पे this is a curve for normal substrate. Okay, this is a curve with the non-competitive inhibitor. Non-competitive inhibitor, what will it do? So Km value will remain unchanged. Km value will remain unchanged, but it will decrease the velocity. It will decrease the velocity. तो यही तो अपन ने देखा है, और इसके ऊपर एक कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका. So we'll see the remaining part tomorrow, and I hope आपको समझ में आएगा. और एक मिनट, अपन इस इनिबिशन कंप्लीट कर लेते हैं. डोंट गो, इनिबिशन कंप्लीट कर लेते हैं बाद में. नेक्स्ट आता है आपका सुसाइड इनिबिशन, है ना. जैसे आप करते हो, है ना, आपका कुछ दिक्कत हो गया तो आप सुसाइड, है ना. सुसाइड इनिबिशन मतलब क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ इनिबिशन. इन दिस केस ओरिजिनल इनिबिटर जो होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मोर पोटेंट फॉर्म बाय द सेम एंजाइम थॉट टू बी इनहिबिटेड. मतलब क्या कि एंजाइम है जैसे एक एंजाइम है, कौन सा? एक्स वाई जेड, कोई भी करो, कि एक्स एंजाइम है, उसका इनहिबिटर कौन है? उसका इनहिबिटर है जेड. तो जेड जो है वो इनहिबिटर है एक्स. एक्स क्या है? एंजाइम है. तो एक्स क्या करता है? जेड को ऐसा मेटाबोलाइज करता है कि जो मेटाबोलाइट बनेगा वो बहुत ज्यादा पोटेंट इनहिबिटर होगा. मतलब आप बैल मुझे मार, ऐसा किस्सा यहाँ पे है ना. आप बोलते हो आप बैल मुझे मार, है ना. रास्ते पे चल रहा है सांड, आप वहां से जा रहे हो, आपको नहीं है कुछ काम नहीं, तो फिर वो सांड से खेल रहे हो. वो सांड ने अगर सिंग मार दिया तो आपका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा ना. तो वैसे ही यहाँ पे सुसाइड इनहिबिशन होता है. मतलब ए इनहिबिटर is converted by the enzyme into inhibitor is metabolized by enzyme into more potent inhibitor. It is known as a suicide inhibition. So specialized inhibition of irreversible inhibition type. In this case, original inhibitor is converted into more potent form by the same enzyme thought to be inhibited. Are you getting or not? समझ रहा है नहीं? Example of suicide inhibition question आ चुका है. So example of suicide inhibition is nothing but the allopurinol, which inhibits the xanthine oxidase enzyme. Now, allopurinol is used in the treatment of gout. याद रखना है आप. Allopurinol is used in the treatment of gout. Okay. Now, allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. Allopurinol is converted into another compound known as alloxanthine. Allopurinol is converted into another compound known as alloxanthine, which is more effective as an inhibitor than allopurinol. So, in the similar way, 5-fluorouracil. 5-fluorouracil क्या है भाई? It is an anti-cancer drug. Anti-cancer drug होता है 5-fluorouracil. It is converted into fluorodeoxyuridylate, and which inhibit the enzyme thymidylate synthase. So it is a type of example of suicide inhibition. तो suicide inhibition का example याद रखो allopurinol and xanthine oxidase, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि सुसाइड इनहिबिशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक जीपैट 2022 में आया था. Allopurinol and xanthine oxidase is a identified type of inhibition present in the allopurinol and xanthine oxidase. तो ये क्या है? सुसाइड इनहिबिशन है, राइट. बिकॉज allopurinol is converted into alloxanthine by xanthine oxidase, and this alloxanthine is a more potent inhibitor of xanthine oxidase enzyme. And remember, this allopurinol is used in the treatment of gout. इस xanthine oxidase है ना, जो xanthine pyrin को मेटाबोलाइज करता है और बाद में यूरिक एसिड बनता है. तो allopurinol क्या करता है? उसको इनहिबिट करके यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने देता, बिकॉज यूरिक एसिड इफ इट इज इंक्रीज इन द बॉडी इट विल कॉज गाउट एंड आर्थराइटिस, राइट. तो वैसे ही आपका अनदर एग्जांपल है 5-fluorouracil which get converted into fluorodeoxyuridylate which inhibit the enzyme thymidate synthase. And लास्ट में आता है allosteric inhibition. Allosteric inhibition of allosteric regulation as a part of regulation of enzyme activity. Allosteric effector or modulator modify the enzyme action, binds at the allosteric site and regulate the enzyme activity. तो यहाँ पे जैसे एक्टिव साइट होता है, वहाँ पे एक और साइट होता है एलोस्टेरिक साइट. तो एलोस्टेरिक साइट मतलब वहाँ पे जो
रेगुलेटर से एलोस्टेरिक रेगुलेटर वो वहाँ पे बाइंड करेंगे, एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेंगे. इट इज साइट अदर देन एक्टिव साइट, यहाँ पे बाइंड है. So allosteric inhibitors, what will they do? They will bind with the another site of enzyme other than active site, and they will inhibit the enzyme. So they are known as allosteric inhibitors. तो allosteric inhibitor, and today we will conclude. बाकी का जो पार्ट है अपन कल देखेंगे.